out of that silence, out of that profound silence, emerges clarity, insight, and clarity comes in, one becomes humble, and from that humility, we reach the presence of sublime beauty and divinity. On January 2nd, in this book of life, Krishnaji continues with the subject of listening. He raises a question: can we put aside the screens? Krishnaji is inquiring and says to all of us, how does one listen? So often, when someone is talking to us, we don't pay attention to what he is conveying, but we are preparing for answers using our minds and trying to build answers to his questions, pretending as if we are listening to him. Krishnaji is asking, when one is listening, is he just listening or using the projections of his mind? Krishnaji is asking, when one is listening, is he just listening or using his projections for the mind, which could be related to the past or to the future, but not definitely to the present. The moments of the present are always missed. Krishnaji, while listening, he said, one is remembering, visualizing all the ambitions, all the desires, all the fears, all the anxieties, and we are picking and choosing what we would like to hear, and hearing only those things which pleases us. No one wants to listen to those ideas which are not comfortable to one's mind. This is his observation. Krishnaji says, when one is using screens, one is using filters as to what he would like to listen, then that person is not listening completely, but having a monologue within himself, accepting, rejecting, and things like that. Listening to all the sounds down within, which are from within, listening to all the sounds from within and without, one can't really pay attention to what is being said. If I am always careful to only listen, then I'm not paying attention to what is happening within me and what is happening outside me. So these two sounds which are happening within and without are not of any consequence, but I'm just listening, and that would actually give me the right perspective. It is important to listen without comparing with what we know, or agreeing or disagreeing with the speaker is not the way to listen, he used to say. So Krishnaji is asking, can we put the screens away? Can we put the screens away and just listen? Listen to what is being said totally and completely. Listening not with our projections, but just listening, just listening. To listen this way, Krishnaji says that there should be complete inward silence, complete inward silence, a relaxed state in which one is listening with rapt attention, with alacrity and with ease. A passive attention with no comparisons or justifications or arriving at verbal conclusions. If one is considerate, one is full of love, then only then one can listen the way Krishnaji wants us to listen. According to him, listeners of this kind are rare to find. We are caught up with results, not with the work. That work is listening. As long as some of us wants to win, as long as some of us wants to win, there is no listening with the heart. We have to listen with our heart. So as long as one wants to win, there is no listening which is happening with the heart. When one listens with attention, with love, not with screens on, then the words will sound like music. This is what he said. When we are with our own thoughts, when we are residing with our own thoughts, when we are dwelling in our own thoughts, we can't establish the connect. Listening to anyone, listening with no projections, prejudices, then listening to anyone becomes just listening, and that is complete listening. Sometimes we listen trying to find out a solution for a problem which is troubling us. We are listening with a mind which is preoccupied. Because we are wanting to find a solution, our mind is preoccupied with 1001 things. Can we simply listen, keeping aside all those? Can we simply listen
keeping aside all those? Can we be still not thinking when we listen? Can we be still not thinking when we listen? We should listen this way to nature and everything that is in nature. To listen, to learn, the mind has to be quiet. Every time one listens, listen afresh, not listen with the baggage of the past. Too much of information, which we call it as knowledge, is actually an impediment, he used to say. What does Krishnaji say? What are his thoughts for May 10th? Krishnaji is talking about how to observe oneself, how to observe one's feelings and emotions. The feeling is separate from the person. The feeling is separate from the person. He is talking about a common feeling of jealousy. He used to take examples from life, and here he's talking about jealousy. As an objective observer, how does one see jealousy? Does one see jealousy as separate and than himself, who is looking at jealousy, or jealousy and himself are separate? When we are not objective about jealousy, we justify the jealousy one has, and we try to change the way we look at jealousy. When we justify jealousy, the feeling of jealousy leaves us temporarily and comes back strengthened from outside once again after passage of time, after the passage of time. Can we look at jealousy without calling it jealousy? Can we just see that feeling operating in us objectively? We have to be totally attentive and aware. When that complete awareness is there with no labels, then the observer is disappearing as one has become that feeling, that deep understanding dawns in us, leading us to a state where me or the observed melts away. There is no judging, no justification, just observing. One becomes that feeling, then there is no observer. This is the first part A. I think I've taken 15 minutes or 17 minutes, I do not know. Yeah, you can pass it on to others. You have ended it right on time, sir. And now I will just invite Varshaji to summarize it in Gujarati. And in short, I will just introduce Varshaji. Of course, आप सभी लोग जानते हैं वर्षा पटेल जी को कि वे अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है, रोहित लॉज गुजरात से संबंधित रखती है, गुजरात फेडरेशन से नेचुरली है ही। उन्होंने एमए, बीईडी, पीएचडी और वो पीएचडी भी विशेषकर एग्रीकल्चर में किया है और क्रेडिट एंड डेवलपमेंट उनके विषय रहे हैं एग्रीकल्चर में। वे इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात में। करंटली वो रोहित लॉज अहमदाबाद की भी प्रेसिडेंट हैं, यूथ और यंग चेयरमैन रही हैं गुजरात फेडरेशन की पहले, साथ ही कोऑपरेटिव काउंसिल मेंबर ऑफ इंडियन सेक्शन भी रही हैं और नेशनल लेक्चर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन सेक्शन भी रही हैं। वे मॉडरेटर थी यंग यूथ प्रोग्राम जो कि गुजरात में हुआ, भोपाली में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ और अलग अलग जगहों पर वे उन्होंने ये कार्यभार संभाला है। वे सोशल एक्टिविटीज करती रहती है बुद्धा थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के द्वारा संपूर्ण गुजरात में। आइए वर्षा जी, आपका स्वागत। खूब खूब आभार तरल सर, एनसी कृष्णा सर, विभा जी અને સભી ઉપસ્થિત સભ્યોને મારા નમસ્કાર। સીધું ટ્રાન્સલેશન શરૂ કરું છું। મોટાભાગે આ પુસ્તકમાં જે વર્ણન કર્યું છે તો એની શરૂઆત એનસી કૃષ્ણએ આ રીતે કરેલી કે આ પુસ્તકમાં જે કુદરતી દ્રશ્યોનું વર્ણન છે એમાં મોટાભાગના જે પાર્ટ લીધા છે એ રેડનવુડ પાર્ક લંડન, ઓજાઈ, એની ખીણ અને રાજઘાટના પ્રાકૃતિક નજારાઓનું કેટલાક અંશોનું વર્ણન છે। સાથે સાથે જીવનના આ પુસ્તકમાં જીવનના પ્રવાહોની સાથે જે સંકળાયેલી છે અગત્યની વાતો, જેમ કે નિરીક્ષણ, ધ્યાનની અવસ્થા, આપણે કેવી રીતે સાંભળવું જોઈએ, આપણે કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને એક ઉચ્ચ જે ધ્યાનની જે અવસ્થા છે એને આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીને કેવી રીતે આપણું રૂપાંતર આપણે કરી શકીએ। તો આવી અગત્યની કેટલીક બાબતોને આ જીવનના પુસ્તકમાં વણી લીધી છે। તો ચાલો આપણે આ અગત્યની પુસ્તકના કેટલાક અગત્યના અંશોમાં પ્રવેશ કરીએ। પ્રિય બંધુઓ, આપણે જીવનનું પુસ્તક
પાનાના થોડાક અંશો આજે ધ્યાનમાં લઈશું. મેં આ પુસ્તિકા પસંદ કરી કારણ કે કૃષ્ણજી તેમના પ્રાકૃતિક નિરીક્ષણની વિગતો આ પુસ્તકમાં લખતા અને તેનું વર્ણન કરતા. કૃષ્ણજીના નિરીક્ષણમાં પ્રાકૃતિક દ્રશ્યોના વર્ણન પરથી તે એટલું બધું તાદ્રશ્ય હતું કે જાણે કે ઓજાઈની ખીણોનું વર્ણન તે પારદર્શક લાગે અને સાથે માની લો જાણે કે તે રાજઘાટની ગંગા નદીના કિનારા ન હોય. ખરેખર માછીમાર તેના હોડીના હલેસાને હંકારતો આપણે જાણે કે જોતા હોય એમ લાગે. સાથે રેતીમાં એક સ્ત્રી તેની પુત્રી સાથે ચાલતા કે જાણે કે પુલ પરથી ગાડી પસાર થતી હોય એવું આપણને આબેહૂબ લાગે. જ્યારે મેં એક દિવસ કૃષ્ણજીના ઓરડામાં તેમની સાથે રાજઘાટમાં પસાર કર્યો ત્યારે તે આશ્ચર્યજનક વર્ણનોની મને ખુદ અનુભૂતિ થઈ. શ્વેત સફેદ પક્ષીનું ગાન જે ગંગા નદીમાં સહેલાઈથી તરે છે તે પક્ષી, પાણીમાં પડતા સૂર્યના કોમળ કિરણો, તે સૂર્યપ્રકાશનું પ્રતિબિંબ. મને કૃષ્ણજીએ શીખવ્યું હતું કે તેના બાળક સાથે ચાલતી એક સાધારણ સ્ત્રીને કેવી રીતે જોવી અને આ બધું ઉપરથી મને એ શીખવા મળ્યું કે પ્રકૃતિનું નિરીક્ષણ મારે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. આપણે ધ્યાન નથી આપતા જેમ કે તે નિરીક્ષણ કરતા તે આ નિરીક્ષણ નથી. સૂક્ષ્મમાંથી સૂક્ષ્મ વિગતો અને તેના હાવભાવ આપના પસંદગી યુક્ત શબ્દો વાપરીને એટલે કે એક કવિની જેમ આપણે આવા વાક્યોને કાળજી અને પ્રેમથી વાંચીએ છીએ એટલે કે ફક્ત વાંચીએ જ છીએ ત્યારે આપણે તે બધા દ્રશ્યોની વિગતો જોતા જાણે કે તે આપણી સાથે જ હોય અને તે આપણી સાથે વાત કરતા હોય એવું લાગે તો જ જાણે એ સાચું વાંચન અને સાચું નિરીક્ષણ કહેવાય. મોટેથી વિચારતા અને જેમ તે કહેતા એ પ્રમાણે કૃષ્ણજીએ તેમના બધા પ્રવચનોની હારમાળા શ્રવણ કળાના વિષય સાથે અર્થાત સાંભળવાની કળાના વિષય સાથે એવું કરતા. બુક ઓફ લાઈફની પ્રથમ શરૂઆત તે શ્રવણ કળાના વિષય ઉપર જ છે. તે આપણે શું કરવા માંગે છે તે સમજવા આપણે પ્રયત્નશીલ છીએ. પુસ્તકના પ્રારંભિક તબક્કામાં આપણને સાંભળવાથી એક પ્રકારનો ગહેરો આનંદ આવશે. તેઓ એવી શાંતિ વિશે વાત કરે છે જે વાર્તાલાપ સિવાયની હોય એટલે કે શબ્દોથી પર હોય અને સર્વાંશે શાંત રહે છે. આ રીતે આંતરિક એકાંતનું નિરીક્ષણ કરવાથી તે માટે યત્નશીલ રહેવાથી તે એકાંત જાણી શકાય છે. જેવી રીતે વિદ્યાર્થી શાળાએ જાય છે તેમ આપણું જીવન પણ એક શાળા જ છે જેમાં આપણે જઈ શકીએ છીએ અને સ્વયંને પોતે નીરવ શાંતિનું નિરીક્ષણ અને અનુભવ બંને કરી શકીએ એમ છીએ જો એ આપણને કરતા આવડે તો. અને આ જ પ્રયત્ન વગરનું એટલે કે સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથેનું અને પ્રયત્ન વગરની સહજ એક ધ્યાન અવસ્થા છે એવું આપણે કહી શકીએ જેમાં કોઈ નામાભિમાન નથી. નામાભિધાન એટલે કે કોઈ લેબલ એમાં નથી. શું આપણે આવું વારંવાર કરી શકીએ ખરા? જો એ કરતા આપણને આવડે એ કળા વિશે આપણે જો જ્ઞાત થઈએ તો આવું આપણે વારંવાર કરી શકીએ. ખરેખર પદાર્થ શું છે તેની વિગતો જાણ્યા પછી આપણે સંપૂર્ણ સમજી શકીએ. આપણે તે શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે ઉપયોગી છે અને જે ઉપયોગી નથી. માત્ર આનંદપૂર્વકનું ધ્યાન સર્વાંશે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જ્યારે આપણે એમાં સંપૂર્ણ નિમગ્ન થઈએ ત્યારે તે પક્ષી ગુલાબ જેવું જ છે એવું જ આપણે નિહાળી શકીએ અને આવી સ્થિતિએ મન શાંત હોય છે. આ સ્થિતિએ વ્યક્તિ જે પણ નિરીક્ષણ કરે છે તે સમય સંપૂર્ણ તે એની સાથે હોય છે. આમ વ્યક્તિ નિરીક્ષણ કરતા શાંત ચિત્તે ચીર શાંતિને પામી શકે છે. આ ચીર શાંતિ ત્યારે જ અનુભવી શકાય છે જ્યારે આંતરિક કોલાહલનો અભાવ હોય, હુપણાનો અભાવ હોય, મન નિર્ભર હોય અને આવી સ્થિતિએ મન સૂક્ષ્મ હોવાથી નાનો સરખો અવાજ લગભગ બધા જ પ્રકારના દૂરના અને નજીકના અવાજ તે સાંભળી શકે છે. અને આવી હલકાપણાની સ્થિતિએ આંતરિક એકાંતમાં કુદરતી પરિવર્તન નહીં કે લાદેલું પરિવર્તન, આવું પ્રયત્ન વગરનું રૂપાંતરણ વ્યક્તિનું શક્ય બને છે જેને આમૂલ પરિવર્તન કહી શકાય. જેમાં કુદરતી દિવ્યતાની એક આભા હોય છે, ગજબની શાંતિ અને શુદ્ધતા હોય છે અને એમાં જ ઊંડાણપૂર્વકની વિદ્વતા આવે છે અને આવી સ્વાભાવિક સ્થિતિએ વ્યક્તિ સાચી રીતે વિનમ્ર બને છે.
જાન્યુઆરી માસની 2જી તારીખે તેઓ જીવન કળાના વિષય પર જ બોલવાનું ચાલુ રાખે છે, એટલે કે કૃષ્ણજી. તેમણે ઉભો કરેલો પ્રશ્ન બાજુ કહે છે કે તમે ઉભા કરેલા પ્રશ્ન બાજુએ મૂકો. કૃષ્ણજી આપણને બધાને પૂછે છે એમના પ્રવચનમાં કે તમે બધા કેવી રીતે સાંભળો છો, હાવ યુ લિસનિંગ. આપણે બધાની જે બેધાન અવસ્થા છે એમાં કૃષ્ણજી ફરી આપણને પૂછે છે કે તમે કેવી રીતે સાંભળો છો. તો એ વખતે આપણે ખરેખર શું સાંભળીએ છીએ ખરા, કે માત્ર સાંભળવાનો ઢોંગ કરીએ છીએ. આપણું સાંભળવું એ ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય સાથે સંકળાયેલું હોય છે, વર્તમાન સાથે નહીં. સાંભળતા સાંભળતા આપણે તુલના, ચિંતા, શબ્દોનો ભાર, તાણ આ બધું જ બાજુએ મૂકીને સંપૂર્ણ વક્તા સાથે એક થઈને સાંભળીએ છીએ ખરા. અને જો એવી રીતે સંપૂર્ણ વક્તા સાથે એક થઈને જો સાંભળીએ તો ખરેખર એ જ સાચું સાંભળેલું કહેવાય. અને આ સાંભળવાની સ્થિતિમાં જ ઘણા બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે છે અને ત્યાં જ આપણું જે શક્ય છે પરિવર્તન એ બને છે. નિષ્ક્રિય ધ્યાન વિશે તેઓ આગળ કહે છે કે જેમાં કોઈ તુલના, ખરાઈ, પ્રયત્ન ના હોય. વ્યક્તિ જ્યારે સંપૂર્ણ શાંત અને જાગૃત હોય ત્યારે તે ખરેખર સાંભળી શકે છે. અને આવા પ્રકારના શ્રોતાઓ ભાગ્યે જ મળશે. આપણે પ્રશ્ન સાથે નહીં પરંતુ પરિણામો સાથે સંકળાયેલા છીએ, કામ સાથે નહીં. જ્યારે હૃદયથી શ્રવણ કરવામાં આવે ત્યારે જે શબ્દો છે એ દૈવી સંગીત બની જાય છે. જ્યારે આપણે આપણા વિચારોથી ભરેલા હોઈએ ત્યારે તે જોડાણ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શકતા નથી. કોઈને સાંભળવા જ્યારે પૂર્વગ્રહ વગરનું આપણું મન હોય. આપણે દુઃખદ સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા હોઈએ છીએ ત્યારે તેના ઉકેલ માટે આપણે સાંભળીએ છીએ, અન્યથા નહીં. જ્યારે આપણે મનથી સાંભળીએ છીએ ત્યારે માલિકીપણાનો ભાવ એટલે કે હુંપણાનો ભાવ હોય છે. શું આવી સ્થિતિ એ સાંભળી શકાય? તો ના. કૃષ્ણજી કહે છે જે કુદરતમાં છે તે બધું સાંભળવું જોઈએ. મનને શાંત કરવાનું છે. અને દરેક વ્યક્તિ મનુષ્ય સાંભળે છે ત્યારે ભૂતકાળના ભાર સાથે સાંભળે છે અને ત્યારે તે વ્યક્તિ શુદ્ધ નથી હોતો. આથી વર્તમાનમાં રહીને જ આપણે નિર્ભાર થઈને, નિર્ભીક થઈને આપણે સાંભળવું જોઈએ. એ બાબત, એ કળા આપણને અહીંયા કૃષ્ણજી શીખવવા માંગે છે. આપણે આપણી જાતનું નિરીક્ષણ કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે કૃષ્ણજી કહે છે. જેમ કે કોઈ સ્ત્રી ઈર્ષ્યાથી ભરેલી હોય તો તે વિશે કહે છે. નિરીક્ષક ઈર્ષ્યાને કેવી રીતે જુએ છે? શું તે ઈર્ષ્યાને અલગ રીતે જુએ છે કે ઈર્ષ્યાની રીતે જ જુએ છે? ઈર્ષ્યાને બદલવા માંગીએ છીએ, ઈર્ષ્યાની લાગણી આપણે છોડી દઈએ છીએ પણ તે ફરીથી પાછી આવે છે. તો શું આપણે ઈર્ષ્યા કહ્યા સિવાય જોઈ શકીએ ખરા? આપણે સંપૂર્ણ એકાગ્રચિત્તે ધ્યાનથી સજાગ રીતે જોવાનું, તે સંપૂર્ણ જાગૃતિ, કોઈ લેબલ વગરની. અને આવી સ્થિતિએ જ કોઈ પણ પ્રકારનું પૃથ્થકરણ કર્યા વગર જો આ સ્થિતિએ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો ગાઢ સમજણને નિરીક્ષણ કરતા પામી શકે છે, એટલે કે સમસ્યાના મૂળમાં જઈ શકે છે. અને ત્યારે આવી જ સ્થિતિએ આપણો જે હું છે, આપણો જે અહંકાર છે, આપણો જે માલિકી ભાવ છે એ ઓગળી જાય છે. અને આ સ્થિતિએ આવું નિરીક્ષણ કરવાથી વ્યક્તિ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય એક જ બની જાય છે. અને જ્યારે દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય એક બની જાય છે ત્યારે દ્રષ્ટા એટલે કે નિરીક્ષણ કરતા એ અદ્રશ્ય થાય છે. થેન્ક યુ. सर हो गया. आप सब लोग एकदम समय पर आज कर रहे हैं और बस आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा विभा जी को. विभा जी का भी एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी इंडियन सेक्शन की 2015 से और करंटली वो सेक्रेटरी है नोडिया लॉज की. वे प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली रीजन की टीओएस की और प्रोफेशन से वो एक आईटी इंजीनियर हैं और मास्टर्स डिग्री उनके पास है साइंस, जो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में हासिल किया है. उनका एजुकेशन इसके पहले पुणे और दिल्ली में हुआ और जहाँ की यादें उन्हें लगातार हैं अपने जहन में और वहाँ उनकी बहन भी रहती है जिनकी यादों से वो अभी भी अपने आप को अलग नहीं कर पाती. उनका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है और एक ऐसा जिज्ञासु मन है या माइंड है या दिमाग है
कि वे मानती हैं कि ये उन्हें पिताश्री के कारण हासिल हुआ, और स्पिरिचुअलिटी जो है उसका इन्फ्लुएंस उन्हें अपनी माताश्री से मिला। अपने आईटी करियर के दौरान में विश्व में हर कोने में घूमी है, बहुत सारे देशों को उन्होंने विजिट किया है, और बहुत अलग अलग समयों को उन्होंने देखा है। ये उन्होंने एक बहुत ही बहुमूल्य, उनको ये एक अवसर मिला जो अलग अलग तरह के लोगों को जानने का, अलग कल्चर्स को जानने का, अलग अलग जगहों को जानने का, और उसने उनको उनकी इस सारी ज्ञान को बहुत नर्चर किया। वो उनका शौक है पढ़ना, और वो ये रीडिंग ही है जो ये शौक है जो उनको थियोसॉफी तक खींच लाया। वो लाइब्रेरीज में घंटों बिता सकती हैं, और वे बहुत ही अपने आप को टोटली थियोसॉफी के अंदर अपने आप को इस तरह से मानती हैं कि थियोसॉफी को उन्होंने नहीं ढूंढा, रादर ये कह सकती है वो कि थियोसॉफी ही ऐसी चीज है जो जिन्होंने विभाजी को ढूंढा। तो वो ये सर्च अभी भी चालू है उनका, और जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, और आज हमारे बीच हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू तरल जी। नमस्कार, नमस्ते डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इस त्रिवेणी मीट के सभी ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार आज मुझे ये अवसर देने के लिए। ब्रदर NC कृष्णा जी, वर्षा जी, आपके साथ ये फोरम शेयर करते हुए NC कृष्णा जी द्वारा दिया गया जे कृष्णमूर्ति जी के विचारों की जो उन्होंने अभिव्यक्ति की है उसका अब मैं आपको हिंदी रूपांतरण बता रही हूँ। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म दिवस कल है 11 मई, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम उनकी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, इसकी कुछ प्रविष्टियों पर विचार करेंगे। जे कृष्णमूर्ति जी इतनी बारीकी से प्रकृति का अवलोकन करते थे और गहराई से उसका विवरण लिखते थे कि पढ़ने वालों को ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए हैं, चाहे वे ऊंचाई की घाटियां हों या गंगा का किनारा। उनकी लिखने की शैली इतनी सशक्त है कि आंखों के आगे वे दृश्य जीवंत हो उठते हैं। गंगा की लहरों पर नाव चलाता मछुआरा, गंगा की रेत पर कदम बढ़ाती एक माँ और उसकी पुत्री, या पुल पर से गुजरती रेलगाड़ी, इन तमाम दृश्यों का बड़ा ही ज्वलंत विवरण वे लिखते हैं। वाराणसी में राजघाट में आधा दिन उनके कक्ष में व्यतीत करने पर यह बात समझ में आती है कि किसी चीज को बारीकी से कैसे देखा जाए। सूर्योदय का दृश्य हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, गंगा की मंद धारा, जल से खेलती सूर्य की किरणें, इन सब को मानो हम उनकी आंखों से देखते हैं। साधारण सामान्य दृश्यों पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर अत्यंत मनोरम शब्दों में उसका बारीकी से उल्लेख करना, हमारे लिए यही उनकी सीख है। उनके द्वारा लिखे ऐसे विवरण पढ़कर लगता है कि मानो वे हमारे साथ हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति जी अपने सभी लेक्चर्स की श्रृंखला सुनने की कला इस विषय से शुरू करते हैं। हालांकि उन्होंने यह टाइटल नहीं दिया है, ये एडिटर ने दिया है, फिर भी सुनने की जो क्रिया है यही विषय उन्होंने लिखा है। उनकी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ की पहली एंट्री इसी विषय पर आधारित है, आराम से या सुगमता से सुनना। वे कहते हैं कि मौन रहकर, तनाव रहित रहकर और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमें अपने अंतर्मन का निरीक्षण करना है। हमारा जीवन ही हमारी पाठशाला है। हमें स्वयं का अवलोकन करना है और पूरी तरह से मौन रहकर, सरलता पूर्वक, पूर्ण ध्यान केंद्रित करके, वस्तुओं को नाम दिए बिना, उनका वर्गीकरण किए बिना सरलता से उनको देखना है। साधारणतया किसी वस्तु को देखते ही हम यह जानना चाहते हैं कि वह आखिर है क्या, किंतु हमारा प्रयास बिना उस वस्तु का नाम जाने, बिना उसकी उपयोगिता जाने, प्रसन्नचित्त एकाग्रता से उसको देखना चाहिए। इस प्रकार देखने से दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं रह जाता, उनमें एक समन्वय स्थापित हो जाता है। दृष्टा स्वयं ही वह पक्षी हो जाता है, वह गुलाब हो जाता है, जो कुछ भी वह देख रहा है। ऐसी स्थिति में
मन गहन, शांत और स्थिर होता है। जो कुछ भी दृश्यमान है उससे दृष्टा का एकात्म्य स्थापित हो जाता है। वे कहते थे, ऑब्जर्वर मर्जेस विद द ऑब्जर्व्ड। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे शब्दों में व्यक्त करा नहीं जा सकता। मन की ऐसी अवस्था में आसपास की बारीक से बारीक ध्वनि और दूर दराज की भी हर प्रकार की ध्वनि सुनी जा सकती है। इस प्रकार सरलता से बैठे हुए मन सब कुछ ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। चेहरे पर कोई तनाव या आतुरता नहीं रहती, क्योंकि हमने स्वयं को समय की साधारण घड़ियों से ऊपर उठा लिया है। फिर भी हम पाते हैं कि किंचित भी परिश्रम के बिना हमारे अंतर्मन में एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन वास्तविक है, सहज और प्राकृतिक है। इसमें इच्छा पूर्वक सोची समझी कोई योजना नहीं होती है। ऐसे परिवर्तन में अप्रतिम सुंदरता है, जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती। उस अनिर्वचनीय सुंदरता को शब्दों में प्रकट करने का प्रयास निष्फल ही होता है। मन की ऐसी परम शांति में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि का उद्गम होता है। उनके उदय होते ही मन में स्वाभाविक ही विनय का आविर्भाव होता है। इस दीनता को, इस विनम्रता को प्राप्त होने पर ही हम दिव्यता की सीमा को छू मात्र पाते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी ने अपनी पुस्तक में पिछली प्रविष्टि 1 जनवरी की लिखी थी। सुनने की कला इस विषय को आगे बढ़ाते हुए 2 जनवरी को भी वे आगे लिखते हैं। वे हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हमने अपने मानस पटल को अलग रख दिया? मानस पटल का अर्थ यहाँ पे हमारी मेंटल स्क्रीन है, जिसपे हम सब प्रोजेक्ट करते रहते हैं। सो इट इज द मेंटल स्क्रीन। सवाल यह है कि हम किस प्रकार सुनते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तब प्रायः उसके कथन की ओर ध्यान न देकर हम अपने प्रत्युत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। यह मात्र दिखावा होता है कि हम उसका कथन सुन रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति जी प्रश्न उठाते हैं, क्या हम कही गई बात का सचमुच वर्तमान में सुनते हैं, या फिर अपने इस मानस पटल पर भूतपूर्व अनुभवों का या भावी आकांक्षाओं का प्रोजेक्शन करते रहते हैं, यानी उनको प्रक्षेपित करते रहते हैं। सुनते समय हम कुछ स्मरण या कल्पना करने लगते हैं। क्षुद्र इच्छाएं, भय, चिंता, साथ ही हमें वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। मन को रुचिकर ना लगे ऐसे विचारों को हम सुनना ही नहीं चाहते। सुनते समय जब हम अपने मन के चित्रपट का उपयोग करते हैं या फिर अपनी पसंद नापसंद की जो छलनी है उसका उपयोग करते हैं, यानी फिल्टर, तब यह सुनना नहीं बल्कि स्वयं से संवाद करना होता है। इट्स अ मोनोलॉग, स्वयं से संवाद कर रहे हैं हम। इस प्रकार के अंतर्मन की ध्वनि या बाहर की ध्वनियों को सुनते रहने से अगले व्यक्ति की वार्ता पर हमारा पूर्ण ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। किसी बात को सुनकर तुलना करना या जो कहा जा रहा है उससे सहमत असहमत होना वास्तव में सुनना नहीं है। इसलिए कृष्णा जी का प्रश्न है, क्या हम अपने मानसिक चित्रपट को हटाकर केवल जो बात कही जा रही है उसी पर ध्यान केंद्रित कर सचमुच में पूर्ण रूप से सुन सकते हैं? उनके अनुसार इस प्रकार के श्रवण के लिए हमारा अंतर्मन पूर्ण रूप से मौन और शांत होना चाहिए। सुनने की सरल, सुगम, एकाग्रचित अवस्था जिसमें उमंग भरी तत्परता हो, किंतु कोई जस्टिफिकेशन यानी औचित्य ना हो, कोई कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ना हो और कोई कंपैरिजन ना हो। यदि हम इससे टाइम यदि हम विचारशील हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, तभी हम इस प्रकार सुन सकते हैं जिस प्रकार कृष्णा जी चाहते हैं। और ऐसे श्रोता विरले ही मिलते हैं, वेरी रेयर।
हम परिणाम में ही उलझे रहते हैं बजाय सुनने की क्रिया में। जब तक श्रोता स्वयं विजयी होना चाहता है वह हृदय से नहीं सुनता, किंतु कृष्णा जी के बताए अनुसार सुनने पर शब्द दिव्य संगीत बन जाते हैं। स्वयं के विचारों में खोए रहने से बोलने वालों की बातों से तारतम्य नहीं जुड़ पाता। बिना किसी पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस के सुनना ही वास्तविक सुनना है। कभी कभी हम अपनी किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, किसी अन्य की बात सुनते हैं, मन में हजारों तरह की उधेड़बुन चल रही होती है, तब क्या हम वास्तव में उस व्यक्ति की बात सुन रहे हैं? स्थिर मन से बिना कोई विचार लिए हमें प्रकृति की आवाज और उस प्रकृति में जो कुछ भी है उसकी आवाज सुननी चाहिए। सुनने और सीखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। हर बात को एक नए सिरे से सुने, लिसन अफ्रेश, पुरानी बातों से जोड़कर नहीं। जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह अत्यधिक जानकारी के अलावा कुछ नहीं है और यह सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। अपनी 10 मई की प्रविष्टि में स्वयं का अवलोकन यानी अपनी भावनाओं और उमंगों का अवलोकन कैसे करें, इस विषय पर जय कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं। वे कहते हैं कि भावनाएं व्यक्ति से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य सी भावना ईर्ष्या, इस पर गौर करें। क्या एक वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ईर्ष्या को स्वयं से अलग देखता है? लुक एट ईर्ष्या ऑब्जेक्टिवली। यदि वह ऐसा नहीं करता और ईर्ष्या को उचित ठहराता है, तब उस समय तो यह भावना समाप्त हो जाती है, परंतु समय के साथ और बलवान होकर पुनः जागृत होती है। ईर्ष्या यह नाम दिए बिना, भावना को यह नाम मत दीजिए, ईर्ष्या यह नाम दिए बिना क्या हम ऑब्जेक्टिवली उस भावना पर गौर कर सकते हैं? भावना के प्रति पूर्ण जागरूक और एकाग्र होने से ऑब्जर्वर भावना से एक रूप हो जाता है। ऐसी अवस्था में मैं का लोप हो जाता है, द इगोइज्म, आई, मैं का लोप हो जाता है। कोई निर्णय नहीं, कोई औचित्य नहीं, केवल अवलोकन। प्रेक्षक का अस्तित्व भाव रूप में बदल जाता है। सुनने और स्वयं का अवलोकन करने के विषय पर ये थे जय कृष्णमूर्ति जी के कुछ विचार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। और वाकई में जब ये इतनी सरल हिंदी भाषा में आप बखान करती हैं तो पूरा विषय जैसे एक बार फिर दिमाग में घूम जाता है और सेम चीज अच्छे से याद आ जाती है। तो अभी जो हमारा द्वितीय भाग होगा उसके अंदर एनसी कृष्णा जी हमें उन जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के साथ उन्होंने इतने समय बिताया और कुछ संस्मरण होंगे तो वो हमें यहाँ पर सुनाएंगे और फिर वही संस्मरण आप अन्य 2 भाषाओं में भी सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कृष्ण जी। Yes. The first time I had the opportunity, I got the opportunity to see and listen to Krishna ji was when I was 13 years old. I was taken to his public talk by my maternal grandfather, who was a member of the Theosophical Society and at that point of time was a resident on the TS estate and campus. The first lecture or talk, as we say, was on the subject of listening. We were all waiting for his arrival at the venue, Vasanta Vihar, Greenways Road, which was a beautiful place across the river, about 3 kilometers away from the main gate of the estate, our estate. The then International Vice President, James S. Perkins, and Mrs. Catherine Perkins was sitting in the seats next to our seats. Myself and grandfather, next to him was Mrs. Catherine Perkins, and then Mr. James S. Perkins.
So lots of public was sitting on the ground on neatly placed carpets. We were sitting on the foldable wooden chairs with no supports for the hand, so that more chairs can be accommodated. And Mrs. Perkins asked my grandfather, can he follow? Pointing out at me, she asked my grandfather, can he follow? My grandfather very politely replied, he will try to follow. He will try to follow. That was the scene. As we heard, a lot of announcements given out by Mr. Narayanaya and Mr. Balasundaram, who was the principal of the Rishi Valley School. And then emerged Krishnaji with a spring in his walk at 4:57 p.m. and occupied the seat meant for him, which was well arranged, a small rectangle table-like thing on a platform with a cushion and a splendid white sheet of cloth spread on the table, the seat of his talk of that evening. There was a microphone which was tested already, and the crows were making a lot of noise as they were trying to settle down on the mango trees. Krishnaji, after taking his seat, after doing the namaste, he looked at the audience from right to left once, and then from left to right another time. So twice he had complete survey of the audience who were there, and then gazed at the people who were sitting on the floor. And there was a small timepiece which was there on his table to the left of his seat, which was kept in a foldable box. And exactly at 5 p.m., that booming voice we heard when he said, it seems to me that we should consider this evening the method of listening. When he looked at the audience from his seat, though there were easily a couple of thousands as audience, each of us felt that he was looking at us individually. That was the power of his eyes. And that was the direct connect that he established with the people who were assembled to listen to his talk. Actually, he never needed the timepiece. Exactly at 6 p.m., the talk ended, and everyone waited for the speaker to get back to his place of stay in the Vasanta Vihar, that impressive bungalow which you see even today. Some people out of the audience they used to stand on both sides of the path to have a close look at Krishnaji. Some tried touching his feet, which he did not allow. Krishnaji used to visit Madras, as it was called then, during the month of December. Around the same time, the Theosophical Society used to have its annual convention from the 26th of December to the 31st of December. The TS programs were so arranged to enable members of the Theosophical Society to attend and listen to his talks. Me and my grandfather used to walk the distance and reach Vasanta Vihar well in time. In order to keep pace with my grandfather, actually I used to jog. But having reached the Vasanta Vihar, listening to Krishnaji was in fact worth going miles to listen. There used to be 5 talks. Sometimes they used to accommodate the 6th talk too in that series. On our way back, once I asked my grandfather, did Krishnaji mean this when he said this? And my grandfather stopped in his stead, looked at me and said, what did Krishnaji say? One has to listen, reflect, understand, and try not to interpret or repeat those words as if they're our words. I got the message and tried and implemented the method suggested by my grandfather for the rest of my life. Krishnaji, as you all know, referred to himself as a speaker, and he wanted us to think together, and he used to inquire, are you following, sir?
Sometimes Krishnaji used to exhort us, the audience, to pay attention and follow the thought. He used to inquire very frequently whether we are following his thought. He used to remind us that this was not a spiritual entertainment. He said, it's a serious business we're doing, and one is engaged, and sometimes used to chide the audience when they laughed at some of the statements which he used to make. And he used to say, don't laugh, sirs, when the house is burning. He used to dress immaculately in light shaded kurtas, wear the traditional dhoti, and used to wear the waistcoat sometimes. The international president, Brother Sri Ram, always made it a point to attend to his talks. We, the residents, maybe people like me of that same age group around that time, maybe we all rushed to listen to Krishnaji. We, the residents, along with the delegates of the TS Convention, Theosophical Society Convention, Annual Convention, used to attend the public talks. One day, we're returning home. After reaching home, in fact, I asked my grandfather permission to attend the discussion meetings which were usually held on the subsequent morning of the talks. My grandfather told me, you could go carefully across and to remain as a silent observer. Don't get emboldened by other people who are raising questions. You do not raise questions, simply listen to what is being talked about or discussed in that meeting. So I went like that as a 13, 14, 15, 16-year-old. And then later teens, I had the company of a very nice girl by name Shakuntala. She was an engineering student. She used to ride a motorbike in those days, the Java, as it was called, SD, which was later on the name of the bike. She used to ride the motorcycle in those days. We became friends at the venue of the discussion meetings. She used to pick me up from nearabouts the main gate and drop me at the main gate and go back to her place of stay somewhere in Guindy. So that is how we became friends. We used to sit next to each other, and once he wanted us, both of us, to move up and sit closer to him. That was an opportunity to have a close look at him. We were sitting almost on the end of the last row, but then we were asked specifically to move up. So we went up and sat very close to him. He was looking at us with a lot of kindness, love, and affection, which is difficult to describe in words. One morning, after the discussion meeting was over, we were going out of the hall. Me and Shakuntala were walking out of the hall. We were summoned to his ante-room where he was seated near the table. Krishnaji actually invited us for coffee, which we were pleasantly surprised. We were in cloud 9. He asked us what we would like to eat. Shakuntala was looking at me. I was looking at her, not able to decide what to choose. He asked for both of us idlis, bread, butter, and jam. So both were there, and idlis were there with sambar to taste, and then we were in awe. We were not touching the food which was placed before us. We were fortunate to sit so close to him, observe him so closely, and I started using my hands to eat the idlis. And Shakuntala was pointing out at the fork and the spoon. Krishnaji said, let him use his hands. That is fine, he said. The time and the privilege we had was indescribable. He, Krishnaji, used to take long walks on the beach. He used to start his walk from the Elliot's beach side, and that was the starting point. He used to come by car and start his walk from the Elliot's beach side, and he would walk up to the incomplete footbridge across the river and the sea, which is there even today. The bridge was close to our TS campus. We both used to wait for him arrival and walk behind him without disturbing him. He used to wear loose pajamas
and the kurta and wear his sneakers while walking. Sometimes he used to stop and allow us to join him in his walks. The sea breeze used to displace his hair, and he used to look so handsome, and he used to walk trying to place the hair back in its place. But the breeze won most of the times. And I would now say something very interesting, which we were fortunate to see after the discussion meeting. One day, one Gujarati lady was brought on a stretcher by her husband. And the husband requested Krishnaji to bless the lady who was suffering from paralysis. But then Krishnaji said, "No, sir, I'm not a healer. No, sir, I'm not a healer." But then he requested Krishnaji to at least give a darshan to his wife, whose stretcher was lying outside the hall. Then he came out of the hall. He spent 3-4 minutes or maybe 5 minutes looking at her completely from the head to the toe, and looked at her very, very, very lovingly. And then he put his namaste as usual and walked back into the room. And to our surprise, this lady, with the help of her husband, got down from the stretcher and started walking. We were struck, we were amazed, and that is one thing which we saw, which we can never forget. Though he said he was not a healer, because he was a person with so much of love, he could heal anyone. Manju Sundaram ji also told me something very similar to this, which happened at Varanasi. There was another old lady who was not doing well, and she was accompanied by her husband and daughter. And same thing went through, same experience was there. And he said, "No, I'm not a healer." And then he was asked to look at that lady who was there on the stretcher. And the daughter was very, very doubtful of his abilities to cure or heal or whatever. But she was not very happy, I'm told, by Manju Sundaram. The daughter was not very happy. And then he spent his time looking at that old lady who was brought to the stretcher, and then he retired to his room. Later on, the next day, the girl, the daughter of that old lady, came with a garland. And she said, "My mother is able to walk now." And the garland was placed around the neck of the daughter. So that's the two healing incidents which I know personally, one from my own observation and one from Manju Sundaram ji's observation, which I have included here in these tidbits. So there are so many things which we can talk about what Krishnaji did and what sort of questions were answered. And without a dictionary, you would say, the dictionary meaning of this word is this. And I used to come back and refer to the Oxford Dictionary, and it used to be exactly the same. I don't know how it happened. So many times we used to listen to various questions that were raised, and some people used to perhaps think that they're perhaps as well informed or as good as Krishnaji, and they used to raise questions, and he would answer them very patiently, very politely, not losing his cool any time, and he would love to answer those questions very carefully. And we had the privilege, we had the advantage, because we were living in Adyar, and maybe of the same age group as me, a lot of people have done this, and I have pointed out, or I have included all whatever little. There are so many things which I could perhaps go on explaining, but then this is something which I thought were very, very interesting, and I have included these tidbits for your consumption. Thank you so much. Thank you, Krishnaji. It was really wonderful. It was as if we were also walking in your memories and seeing Jidduji in front of us, especially when you explained the ocean air and everything. Really, the entire scene became live before us on our mind screen. Now, वर्षा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुजराती में आप इसी संस्मरण का मतलब बताएं. धन्यवाद. બંધુઓ, વિભાગ 2 માં આપણે NC કૃષ્ણ સરના જે કૃષ્ણમૂર્તિ સાથેના જે કેટલાક અંગત સંસ્મરણો છે, તો એના કેટલાક અંશોનું એમને વર્ણન કર્યું ઇંગ્લિશમાં. તો એ ગુજરાતીમાં હું એના કેટલાક અંશો હું શોર્ટમાં બોલીશ.
જ્યારે હું માત્ર 13 વર્ષનો હતો, એટલે કે એનસી કૃષ્ણ સર, ત્યારે પ્રથમ વખત જે કૃષ્ણમૂર્તિને જોવાની અને સાંભળવાની તક મને પ્રાપ્ત થયેલી. તે વ્યક્તિ જે કૃષ્ણમૂર્તિ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના અડિયારમાં જ રહેતા હતા અને તેમના જાહેર પ્રવચનોમાં મારા દાદાજી મને લઈ ગયેલા અને એમનું પ્રથમ પ્રવચન સાંભળવાની કળા એ મેં સાંભળેલું. એનું વર્ણન કરતા તેઓ કહે છે કે એ વખતે અમે શ્રોતાઓની સમક્ષ જ્યારે શ્રોતા બનીને ગયેલા, ત્યારે એ વખતે થિયોસોફિકલ સોસાયટીના જે પ્રમુખ હતા જેમ્સ પાર્કિન્સ અને મિસિસ પાર્કિન્સ, તો એમની બાજુમાં બેસવાની અમને તક મળેલી. જે કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે તેઓ કહે છે કે તેઓ બરાબર 4:58 પોતાના નિવાસ સ્થાનેથી બહાર આવ્યા અને તેમના માટે જે વૃક્ષ નીચે એક સુંદર મજાની બેઠક બનાવેલી એના ઉપર આવીને સીધા ટટ્ટાર એમની રાબેતા મુજબની ટેવ પ્રમાણે એઓ બેઠા અને સર્વને નમસ્તે કહ્યું અને ત્યાર પછી પ્રેક્ષકો તરફ ડાબેથી જમણે અને જમણેથી ડાબે જોયું અને જે જગ્યાએ તેઓ બેઠેલા ત્યાંથી એનસી કૃષ્ણ સરને લાગ્યું કે અમારો કૃષ્ણજી સાથેનો સીધો સંપર્ક બરાબર સ્થાપિત થયો છે. તેઓએ બરાબર 6 વાગે પોતાની વાત એટલે કે પોતાનું પ્રવચન બંધ કર્યું અને તેઓ બરાબર 1 કલાક બોલેલા. તેમને આમ તો સમય માટે ઘડિયાળની ક્યારેય જરૂર ન પડતી, પણ છતાં ત્યાં ટેબલ ઉપર એક નાની ઘડિયાળ હતી જે એક નાના બોક્સમાં મૂકી હતી. તેઓએ પોતાના પ્રવચનની શરૂઆત એક શબ્દ સમૂહ સાથે કરી જે આ મુજબ છે: મને લાગે છે કે આપણે આજે સાંજે વિચારવું જોઈએ. અને પ્રવચન પછી જ્યારે કૃષ્ણજીને બધા એમ પગે લાગતા ત્યારે એનસી કૃષ્ણ કહે છે કે કૃષ્ણજીને એ પસંદ નહોતું આવતું. આગળ એમના સંસ્મરણોમાં તેઓ કહે છે કે કૃષ્ણજી ભારતમાં દર વર્ષે ડિસેમ્બર માસમાં આવતા અને એ સમયે એનસી કૃષ્ણ કહે છે કે અમારે થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું વાર્ષિક સંમેલન જે 26મી ડિસેમ્બરથી 31મી ડિસેમ્બર સુધીનું રહેતું. તો તેઓ લગભગ દરેક કન્વેન્શનમાં એમના દાદાજી સાથે જતા. તો એ વખતે કહે છે કે મારા નિવાસ સ્થાનેથી લગભગ 4 કિલોમીટર ગ્રીનવેઝ રોડ ઉપર વસંત વિહારમાં કૃષ્ણજી રહેતા. ત્યારે હું મારા દાદાજી સાથે જતો અને કૃષ્ણજીની સાથે ત્યાં જઈને અમે થિયોસોફિકલ સોસાયટી વિશે ઘણી વાતો કરતા. થિયોસોફિકલ સોસાયટીને સક્ષમ બનાવવા માટે કૃષ્ણજી હંમેશા તૈયાર જ રહેતા અને એ માટે તેઓ સમયની પાબંદી હોવા છતાં કોઈને પણ સમય આપતા અને એ વિશે એટલે કે થિયોસોફિકલ સોસાયટીને સક્ષમ બનાવવાના વિષય ઉપર તેઓ ચર્ચા પણ કરતા. એકવાર આવી ચર્ચા કર્યા પછી અમે જ્યારે પાછા ફર્યા ત્યારે રસ્તામાં મેં મારા દાદાજીને પૂછ્યું કે શું હું એ જ સમજ્યો છું જે કૃષ્ણજીએ કીધું હતું. મારા દાદાજીએ જવાબ ન આપ્યો, પણ તેઓ ચાલતા ચાલતા થંભી ગયેલા. એકવાર ફરી આવી ચર્ચા સભાઓની વિગતો આપતું એક પેપર અમને આપવામાં આવેલું, જેમાં નિર્ધારિત સમયે મેં દાદાજીને પૂછેલું કે શું હું આ ચર્ચા સભાઓમાં ભાગ લઈ શકું ખરો. ત્યારે દાદાજીએ હા કીધું અને સાથે કહ્યું પણ ખરું કે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને બીજાઓની જેમ નકામા પ્રશ્નો પૂછવાના નથી. આગળ તેઓ કહે છે કે મારી કિશોર અવસ્થા દરમિયાન શકુંતલા નામની એક એન્જિનિયરિંગ કરતી વિદ્યાર્થી સાથે મારે દોસ્તી થઈ. તે એ સમયે મોટરસાયકલ ચલાવતી અને ટીએસ સેન્ટરથી કૃષ્ણજીના વસંત વિહાર અમે બંને, હું અને શકુંતલા સાથે જતા અને ત્યાં અમે કૃષ્ણજીને સાથે બેસીને જ સાંભળતા. આથી અમે બંને બહુ સારા મિત્રો પણ બની ગયેલા. એકવાર કૃષ્ણજી ઈચ્છતા કે તેઓ બંને એટલે કે અમે, હું અને શકુંતલા એમની નજીક બેસીએ. એક સવારે મીટિંગ પછી અમને કૃષ્ણજીએ મને અને શકુંતલાને તેમની સાથે કોફી અને નાસ્તા માટે આમંત્રણ આપેલું અને સાથે સાથે નાસ્તાની પસંદગી વિશે પણ કહેલું. અમે બંને એકબીજાની સામું જોતા રહી ગયા. ત્યારે કૃષ્ણજીએ પૂછ્યું કે ઇડલી, બ્રેડ, બટર, જામ ચાલશે અને અમે સંમતિ બતાવી. આ રીતે અમને એમની નજીક બેસવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું કે જેનું વર્ણન અવર્ણનીય છે. કૃષ્ણજી સાંજે ફરવા એટલે કે ચાલવા પણ જતા. અમે પણ ક્યારેક અડિયાર બીચ ઉપર સાંજે ચાલવા જતા અને કૃષ્ણજીના આવવાની રાહ જોતા અને તેમની પાછળ તે આવે પછી ચાલતા. તેઓ ઢીલા કપડાં, કુર્તો અને પાયજામો અને ચપ્પલ પહેરતા.
તેઓ ઘણી વખત ચાલતા ચાલતા અમારી સાથે પણ ચાલતા અને સાથે સાથે પવનની લહેરોથી ઉડતા તેમના જે વાળ છે તેને વારે વારે સરખા પણ કરતા. છેલ્લે એમના પ્રસંગમાં તેઓ જણાવે છે કે એકવાર ગુજરાતની એક મહિલાને તેનો પતિ સ્ટ્રેચર ઉપર કૃષ્ણજીની સામે લાવ્યો અને કૃષ્ણજીને વિનંતી તેમને સ્વસ્થ કરવા માટે કરેલી. ત્યારે કૃષ્ણજીએ કહેલું કે હું આવું કોઈ હિલિંગ કે કશું કરતો નથી, છતાં પણ એના પતિનો આગ્રહ ચાલુ જ રહ્યો. ત્યારે આખરે એના પતિએ કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે મારી પત્નીને આશીર્વાદ તો આપો છો. છેવટે કૃષ્ણજી એ મહિલાના સ્ટ્રેચર પાસે 2-3 મિનિટ ઊભા રહ્યા અને નમસ્તે કહીને પોતાના રૂમમાં ચાલ્યા ગયા. નવાઈની વાત અમારા બધા માટે એ હતી કે એ બેન પોતાના પતિની મદદથી સ્ટ્રેચર પરથી ઊભા થયા અને ધીમેથી ચાલવા લાગ્યા અને બધાના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. આવો જ એક પ્રસંગ મંજુ સુંદરમજીએ એમને બનારસમાં પણ કહેલો કે આવો સેમ પ્રસંગ બનારસમાં પણ થયો હતો કે એક મહિલાને એમની પુત્રી સ્ટ્રેચર ઉપર લઈ આવેલા અને કૃષ્ણજી એ એમની સાથે થોડું ઊભા રહેલા, વાતચીત કરી અને મહિલા કહે છે કે એ ફરીથી ચાલતી થયેલી. તો આવું કેવી રીતે શક્ય બનતું? તેના જવાબમાં એમને જણાવ્યું કે કૃષ્ણજી કહેતા કે હું કોઈ હીલર નથી, મારી પાસે કોઈ એવો હિલિંગ પાવર નથી, પરંતુ કૃષ્ણજી દરેકને ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક ચાહતા અને એથી એ શક્ય બનતું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ વર્ષાજી. संस्कृत में बहुत सरस रीते कही आपने. और अब मैं संस्मरण के लिए अर्चना जी से निवेदन करूंगा कि वे हिंदी में इसका अनुवाद करें इन शॉर्ट. आइए अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए. नमस्कार सभी ज्ञानी वक्ताओं को नमस्कार. कृष्णा जी कहते हैं, जब मैं 13 वर्ष का था तब मुझे पहली बार कृष्ण जी को देखने का अवसर मिला था. मुझे मेरे नाना द्वारा उनके सार्वजनिक भाषण में ले जाया गया था, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार में ही रहते थे. मैंने जो पहला व्याख्यान सुना वह था सुनने की कला. वे शाम 4:58 बजे अपने आवास से निकले और कृष्णा जी सीधा बैठ के उनके लिए जो आसन की व्यवस्था की गई थी, वहां एक छोटी सी मेज थी जिसपे एक मुलायम सा तकिया रखा था, उसके ऊपर शानदार सफेद चादर से ढका हुआ था. कृष्णा जी आए, बैठे, उन्होंने दर्शकों को अपने दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं देखा. हालांकि कुछ हजारों दर्शक वो पेड़ों की छांव के नीचे भी बैठे थे और एक जेम्स पर्किंसन और वो उनकी वाइफ भी बैठे थे जहाँ कृष्णा जी उनके नाना जी के साथ बैठे थे. उन्होंने उस तरफ देख के बोला कि ये बच्चा समझ पाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, समझना तो चाहिए. उनके नाना जी ने जवाब दिया. कृष्णा जी ये बताते हैं. कृष्णा जी और भी कहते हैं कि जब उनकी निगाह, कृष्णा जी की निगाह इन हमारी तरफ यानी ऑडियंस की तरफ थी जहां हम बैठे थे, तो उनको ऐसे लगा कि वो उनके साथ वो सीधा जुड़ाव स्थापित हो गया. दरअसल कृष्णा जी को कभी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी एक छोटी सी फोल्ड हो जाए ऐसी घड़ी वो बाजू में रखते थे और बिल्कुल उनका भाषण 1 घंटे चलता था और एग्जैक्टली 6 बजे वो बात बंद कर देते थे. वो अपने वार्ता की शुरुआत ऐसे करते थे कि उन्हें एक वाक्यांश के साथ शुरुआत की कि ये मुझे लगता है कि हमें इस शाम को विचार करना चाहिए. इस बात से वो बात छेड़ते थे. कृष्ण जी हर साल दिसंबर के महीने में आते थे, जब वार्षिक थियोसॉफिकल सम्मेलन उसी समय के आसपास हुआ करता था, जो 26 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच होता है. कृष्णा जी वसंत विहार में ग्रीनवेज रोड, जो उनके कृष्णा जी के आवास के लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था, वहां रहते थे. कृष्णा जी कहते हैं, मैं और मेरे नाना जी पैदल दूरी तय करते थे. अपने नाना जी के साथ तालमेल बिठाने के वो उनके भाग पे भी उनके साथ रहते थे और वो लंबी सी दूरी तय करते थे. तब कृष्णा जी के 5 भाषण हुआ करते थे, कभी कभी 6 भी हो जाते थे. टीएस का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करता था और उन दिनों के दरमियान स्लॉट मुक्त रखा जाता था, जिससे कि टीएस के समक्ष और कई सदस्यों के लिए कृष्णा जी की वार्ता में भाग ले सकें. एक बार ये कृष्णा जी अपने लेखक लौटते समय उसने अपने नाना जी से पूछा कि क्या कृष्णा जी का मतलब वही है जो मैंने समझा? उन्होंने कहा, मेरे नाना जी के उनके स्थान पर रुक गए और मुझसे कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि कृष्ण जी ने कहा सुनना है, चिंतन करना है, समझना है
और कोशिश करनी है कि व्याख्या न करें या उनके शब्दों को न दोहराएं। मुझे संदेश मिल गया और कोशिश की मैं मेरे नाना जी की ये सीख पूरी जिंदगी में याद रखूं। वे कृष्णा जी हमेशा खुद को वक्ता के रूप में संदर्भित करते थे और वे चाहते थे कि हम एक साथ सोचे और पूछताछ करते थे कि क्या सर आप अनुसरण कर रहे हैं। कभी कभी जब वे हताश महसूस करते थे तो दर्शकों को विचार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें याद दिलाते थे कि यह आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर व्यवसाय है और वे चेतावनी देते थे और प्यार से डांटते भी थे। कहते थे जब सदन जल रहा हो तो हंसो मत। जब वे अपने ठहरने के स्थान पर लौट रहे होते या वापस जा रहे होते तो लोग उनका पीछा करते और उनके पैर छूने की कोशिश करते। वे किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते थे। वे एक हल्के रंग के कुर्ते, पारंपरिक धोती, कमर कोट के साथ बेदाग कपड़े पहनते थे। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रीराम हमेशा उनकी वार्ता में शामिल होते थे। सम्मेलन के इतने सारे टीएस प्रतिनिधि और जनता के अन्य सदस्य भी भाग लेते थे, जैसे अपने कृष्णा जी तब छोटे युवान कृष्णा जी थे। एक दिन ये युवान कृष्णमूर्ति ने लौटते समय हम सभी को एक चर्चा का बैठकों का विवरण देने के लिए एक पेपर दिया और चर्चा बैठकों के समय की घोषणा की। वार्ता के अगले दिन सुबह 4:30 बजे चर्चा बैठकें हुई। मैंने अपने नाना जी से पूछा कि क्या मैं वसंत विहार चल सकता हूँ और चर्चा सभाओं में शामिल हो सकता हूँ। मेरे नाना जी ने कहा मैं चल सकता था, लेकिन वहां ध्यान से सुनना चाहिए और दूसरों की तरह सवाल उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब वो अपनी किशोरावस्था की बात करते हैं। मेरी किशोरावस्था के दौरान मेरी पहचान शकुंतला नाम की एक बहुत अच्छी लड़की से हुई थी। वह इंजीनियरिंग की छात्रा थी और वह एक जावा मोटरसाइकिल की सवारी करती थी। हम दोस्त बन गए थे और वह मुझे गेट तक लेती थी और छोड़ती थी। हम धीरे धीरे दोस्त बन गए, एक साथ बैठने लगे और एक बार कृष्ण जी चाहते थे कि हम ऊपर आएं और उनके पास बैठे। वे सभी को प्यार करते थे पर उन्होंने हमें बहुत स्नेह दिखाया। एक सुबह मुलाकात के बाद हमें उनके साथ कॉफी के लिए आमंत्रित किया गया। हम दोनों बहुत खुश हुए और व्यक्तिगत रूप से पूछा कि हम क्या खाना चाहेंगे। मैं शकुंतला को देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। कृष्ण जी इडली, ब्रेड, बटर सब कुछ रखा था, देख रहे थे। हम तो विस्मय में थे। हमारे पास बैठने का सौभाग्य था, इतने करीब उनसे, और मैंने अपनी उंगलियों का उपयोग शुरू करके खाना शुरू किया। शकुंतला कांटा और चम्मच दिखा रही थी। तब कृष्ण जी ने उससे कहा उसे अपने हाथों का उपयोग करने दो, वह ठीक है। उन्होंने कहा हम दोनों के पास जो समय और विशेष अधिकार था वह अवर्णनीय था। उनसे हाथ मिलाया और हमें दरवाजे पर विदा किया। वो शाम को टहलते भी थे, इलियट समुद्र तट की ओर, और कोई बातचीत नहीं होती थी। वे उस सड़क पर चलते थे जो पुल की ओर जाता था, जो आज भी पूरा नहीं हुआ है, और ये हमारे टीएस परिसर के काफी करीब था। हम उनके आने का इंतजार करते थे, हम यानी वो और शकुंतला जी, और बिना उन्हें परेशान किए उनके पीछे पीछे चलते थे। वे ढीले पजामा और कुर्ता पहनते थे और अपने चलने के जूते भी पहनते थे। एक दो बार वे हमारे साथ आने के लिए रुके भी थे। समुद्र की हवा उनके बालों को विस्थापित कर देती थी। कितने सुंदर दिखते थे जब चलते थे और बालों को वापस उसकी जगह पर लगाने की कोशिश करते थे। एक बहुत अच्छा वाक्य उन्होंने बताया जो उन्होंने खुद ने अपनी नजरों से देखा और अनुभव किया। एक बार गुजरात की महिला को स्ट्रेचर पर लाया गया और उसके पति ने कृष्ण जी से उसे ठीक करने का अनुरोध किया। कृष्ण जी ने कहा नहीं साहब, मैं मरहम लगाने वाला या तो हीलर नहीं हूँ। उस महिला के पति ने कृष्ण जी से अपनी पत्नी को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। कृष्ण जी बस जल्दी है और स्ट्रेचर के पास खड़े हो गए। 2-3 मिनट तक रुके और नमस्ते करके अपने कमरे में चले गए। आपको आश्चर्य होगा कि स्ट्रेचर पर बैठी महिला स्ट्रेचर से नीचे उतरी और अपने पति की मदद की वजह से वो धीरे धीरे चली। हम सब तो उस उपचार और चकित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया मंजू सुंदरनाथ जी का, जो उन्होंने भी ऐसा ही वाक्य देखा था। एक बीमार महिला अपनी बेटी और पति के साथ आई थी, वह भी बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कृष्ण जी ने वैसे ही उनको देखा, नमस्कार करके चले गए, और दूसरे दिन वो बेटी ने हार माला लेके आई। चूंकि बेटी को पहले विश्वास नहीं था कृष्ण जी ठीक कर पाएंगे, तो दूसरे दिन सुबह बेटी खुश होके कि मेरी माँ ठीक हो गई है, वो हार माला लेकर आई और उसने कृष्ण जी के
गले में डाला। तो कृष्ण जी इसके बारे में कहते हैं कि मैं हीलर नहीं हूँ, बस मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। थैंक यू। और मैं सभी स्पीकर से कहूंगा कि वे वीडियो ऑन करें ताकि मैं उन्हें स्पॉटलाइट कर पाऊँ। सर्वप्रथम तो आप में से अगर कोई और कोई चीज ऐड करना चाहता हो या कुछ कहना चाहता हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप वक्ताओं को मैं ये कहना चाहूंगा। विभा जी, वर्षा जी, कुछ और कहना ऐड करना चाहते हो? अन्यथा मीटिंग ओपन है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ और कहना हो तो सारे वक्ता यही हैं। कृष्णा जी भी हैं। Yes. हाँ, उदय पकावाला जी ने हाथ वो किया है, बोलिए उदय जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू, आभार। एन कृष्णा जी, कल जिसकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, जो कृष्णमूर्ति दुनिया का महान दार्शनिक है। दुनिया का 3 दार्शनिक जो है, जे कृष्णमूर्ति, रजनीश और तीसरा मैं भूल गया, और इसमें उसकी गणना होती है अरविंद, हाँ, श्री अरविंद, महर्षि अरविंद। तो ये 3 दार्शनिकों में या दार्शनिक है, उसका पूर्व जीवन थियोसॉफिकल सोसाइटी में व्यतीत हुआ और दोस्तों देशन का वो मानस पुत्र था। शुरुआत में जो बात की गई उसमें एक अच्छी बात ये थी कि जीवन एक शाला है और इसमें से हमको शिक्षण लेना है, टीचिंग लेना है। सारा जीवन हम हर रोज हर पल नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है और इसमें से हमको कुछ पाना है। दूसरी बात ये भी सीधी कि जब हम मन से सुनते हैं तो अपने मानसिक रूप से सुनते हैं, और आगे ये बोला गया कि भाई दृष्टा और दृश्य जब एक बन जाए तो निरीक्षण करते अदृश्य हो जाए। तो बड़ी ऊंची ऊंचाई की बात की गई और ये तो कृष्णमूर्ति का एक बड़ा अच्छा वाक्य था। इसको हम खरेखर जी रहे हैं अपने, अब हम जो जी रहे हैं वो वास्तव में हम जी रहे हैं, मतलब कि अपना हमारा जीवन कोई ध्येय लक्ष्य है, हेतु लक्ष्य है, वो कहना चाहते हैं। और आखिरी दूसरे लॉट में भी बताया गया उसके जीवन बारे में, जो कृष्णा जी जो उसका जीवन उसको नजीक से समझे थे कि भाई ये कृष्णमूर्ति को लोग जो पगे लागते थे, नमते थे, तो उसको पसंद नहीं थे। तो ऐसा वो बड़ा नम्र और बड़ा नासिक थे। आजकल तो लोग गुरु लोग अपने पैर जो लोग पकड़ते हैं तो खुश हो जाता है और ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा कृष्ण जी तो बहुत महान आदमी थे, उसको ऐसा पसंद ही नहीं था, बहुत नम्र था। तो ये सब बात जानकर और सुनकर खूब प्रसन्नता हुई। डॉक्टर वर्षा पटेल और विभा सक्सेना ने बहुत अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन किया। और वसंत विहार की बात किया, तो जब मैं अडियार गया था तो वसंत विहार की मैंने मुलाकात किया था और एक अवेयरनेस की कैसेट वहाँ बैठकर मैंने सुना था, वो भी याद है, वो सब संस्मरण है। और ये जो दोनों श्रेणी आज कृष्णमूर्ति के बारे में यहाँ रखी गई त्रिवेणी में, इससे खूब जानना समझना मिला। और तीनों वक्ताओं और कंडक्टर का खूब आभार। धन्यवाद पाकावाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई? शिंदे साहब हैं, अशोक जी हैं, लोखंडे जी हैं, हमारे अपने हर्षवर्धन जी, वो तो काफी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, रमेश भाई अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए सर। हाँ वैसे आज तो तीनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, कृष्णा जी, वर्षा पटेल और अर्चना जी। अर्चना जी भी हिंदी में इतना अच्छा बोल सकते हैं, उनको तो खास अभिनंदन करता हूँ। और वर्षा बहन और अर्चना जी दोनों ने अपने टाइम में पूरी की पूरी मैटर 9 मिनट्स में बताई। वो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी बात छोड़ी नहीं थी, वो अच्छी बात है। ऐड करने में तो यही कहता हूँ कि जो उन्होंने 2 बातें कही कि ये जो लेडी करेक्ट हो जाती है उसका पैरालिसिस में, वैसे ही अपना रोहित मेहता जी जो थे उनको भी हाथ में पैरालिटिक इफेक्ट था। तो कृष्णा जी जब उनसे मिले, अरे कुछ नहीं है कैसा करके उन्होंने टच किया और चले गए, तो बिल्कुल हाथ बराबर हो गया था रोहित मेहता जी का।
वो भी एक मैटर है। और एक विमला ठक्कर करके जो बहन जी थे, जो भी अभी इस रिलीजियस में बहुत ही अच्छी आगे बढ़ते, उनको भी उन्होंने इतना ही कहा। वो विमला ठक्कर जी ने खुद ने लिखा है कि जब उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर, बस एक ही सेंटेंस में उसके पूरे जीवन का बदलाव हो गया और वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सके। ये दो बातें मैंने सोचा कि ये कृष्णा जी की और कुछ बात बता सके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। थैंक यू रमेश जी। शिखर जी कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं सर, सबने इतना अच्छा ऐड किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, और कृष्णा जी, वर्षा जी, विभा जी, अर्चना जी, जिन्होंने इसको इतना अच्छा प्रेजेंट किया। और वैसे तो हम लोग जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो आज मेरे ख्याल से एक बात जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस एनसी कृष्णा जी ने शेयर किए, वो शायद हम लोगों को कहीं पढ़ने को ना मिले। और उसमें से भी जो एक बात जो स्ट्राइक कर गई, अक्सर हम लोग मिरेकल्स या चीजों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन इस केस में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति इतने प्रेम से भरा हुआ है तो वो कोई बिना किसी हीलिंग, जैसे लोग हीलिंग करते हैं बाकायदा उसको प्रोसेस करते हैं, उसके विदाउट भी उसका केवल होना ही वहां पर वो हीलिंग हो जाता है। और उसी को हम लोग शायद मिरेकल इसलिए कह देते हैं कि हमें उसके पीछे का वर्किंग नहीं पता रहता है। तो वाकई में कृष्णमूर्ति जी को कहा ही गया है कि वो कितना, हालांकि बाहर से शायद कई बार वो स्ट्रिक्ट लगते हो या लोगों को डांट देते हो जब उनकी बातें समझ में न आती हो, लेकिन वो उनके मन में सबके प्रति जो एक अनकंडीशन लव था, वही शायद इसीलिए लव को सबसे ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर कहा गया है। तो ये मैं तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुन के, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य कोई कहना चाहता? हर्षवर्धन जी? हाँ जी, अशोक जी भी आ गए। खास करके तो एनसी कृष्णा जी को आज त्रिवेणी में सुनने का एक मौका मिला। कई मतलब कि कोरोना से पहले आए थे अहमदाबाद हमारे यहाँ, और काफी बातें हुई थी, और उसके बाद आज स्क्रीन पर उनको देखा। और त्रिवेणी में कल कृष्ण जी का जो भी हम सेलिब्रेशन करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम काफी महत्व रखता है, और उसी महत्व को हम जिंदा रखने की कोशिश करते हैं अपने दिलों में। और ट्रांसलेशन हिंदी और गुजराती दोनों में विभा जी और वर्षा ने और अर्चना जी ने ये बड़ी उत्सुकता से उन्होंने सब बातें बताई, क्योंकि एनसी कृष्णा के जीवन में घटित हुई थी। और किसी के जीवन में कृष्ण जी के साथ रहने से ये घटित होती है, वो बड़ी ही अहमियत रखती है। और मेरे लिए तो ये बातें इतनी अच्छी लग रही है कि अभी मेरा काम भी कृष्ण जी का जो उन्होंने जो लिखी है डायरी उनकी 1975 का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो काफी ये उनका सरोकार कुदरत से बहुत है। हर्षवर्धन जी, आपका माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है सर। हेलो, तब तक अशोक जी कुछ कहना चाहते हो? उनका कनेक्शन शायद लूज हो गया। नमस्ते तरल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी का जो आज का त्रिवेणी का जो कार्यक्रम आपका रहा, बंधु कृष्णा जी ने वो स्मृति चित्र जो के तो माइंड में उतारे। जय कृष्णमूर्ति को आधुनिक बुद्ध भी कहा गया है, और
हम उनके लेक्चर सुनते हैं और कृष्णा जी को उनके सहवास का एक अवसर मिला है। तो आज उन्होंने जो चित्र, उनके स्मृति चित्र जो सबके मन में तैयार किया गया है, वैसे भी जय कृष्णमूर्ति का सभी हम आदर करते हैं। कल उनके विशेष दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में जो तीनों वक्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका ट्रांसलेशन किया और मुझे लगता है कि उन्हें शब्द शब्द का ट्रांसलेशन किया और उन्होंने जो अपने खुद के एक्सपीरियंस जो उन्होंने आंखों देखी बयान किया, उसमें सचमुच हम सुनते सुनते रोमांचित हो चुके। इतना शब्दों में ताकत थी और ट्रांसलेशन जिन्होंने किया उन्होंने भी उसी ढंग से उसको ये किया। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी श्रद्धा कृष्णमूर्ति जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, मैं अगर कोई और नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बस मैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुनते सुनते रोमांचित हो उठा। वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताए, और ये बड़ी कहीं ये बातें लिखी नहीं है जो कृष्णा जी ने अपने एक्सपीरियंस बताए। मंजू सुंदर जी ने मुझे भी एक बार कहा था और वो हमेशा कहती थी कि मैं कृष्णमूर्ति जी की गोद में खेला करती थी और उनके साथ रहने का उन्हें भी भाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद आदमी एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है और इसीलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा जी, आप या कोई और कुछ कहना चाहता हो? नहीं तो मैं समापन की ओर बढ़ता हूँ। शिंदे सर शायद नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। हाँ तरल जी, हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रही है बराबर? अभी बिल्कुल बराबर आ रही है। कृष्ण जी की बात सही है कि कुछ भी बिना सुनना है तो बीच में कुछ रखो ही नहीं। यानी ये जो रखते हैं हम हैंड्स फ्री, उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगा आज। ठीक है, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं। एनसी कृष्णा जी, आपके बारे में बता रहा था कि जिन लोगों को कृष्ण जी का व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, ऐसी पीढ़ी के आप हैं, और जिनके साथ कृष्ण जी के कुछ ऐसे अभिगम जो हैं, उनका उठना बैठना, बालों पर हाथ फेरना, उनका ड्रेसेस पहनना, उनका चलना। हम जब 80 की साल में वहां पर गए पहली बार अडियार में, तो पता चला कि कृष्ण जी आ रहे हैं, तो जो चल रहे थे ऐसा उनके साथ लोग नहीं चल पा रहे थे, इतना तेजी से वो चलते थे। उनको देखा मैंने तो काफी खुश। ऐसा चलते हुए मैंने उन्हें कहीं कभी देखा नहीं था। बम्बई में सुना था जरूर, लेकिन देखा नहीं था ऐसे चलते हुए। ये बड़ी ही मतलब कि उनकी जो एनर्जी थी इतनी ज्यादा थी। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हमारे बीच में थी। तो हमारे लिए ये बड़ी एक सौगात है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। और जैसे जैसे उनकी रोजनिशी मैंने वो जर्नल्स ऑफ 1973 मैंने पढ़ा, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है, माइन्यूटेस्ट ऑब्जर्वेशन की, जैसे कि कुदरत के बारे में इतना बताना सही तरीके से, उसके बारे में सोचना और लिखना ये अलग बात होती है। ये इसमें सोचना को कुछ होता ही नहीं है, वो सीधे शब्द पर आ जाते हैं, सीधा ही वर्णन करते हैं। और मैं ये कृष्णा जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कृष्णा जी ने, यानी जय कृष्णमूर्ति ने कभी एडवेंचरस होने के बारे में बताया है क्या? कि कोई एडवेंचरस हो जाए, साहसिक बन जाए, सांप के नजदीक चला जाए, कोई नेवला या कोई शियाल हो या कोई फॉक्स या ऐसी कोई चीजें, या बैर, कोई रीछ आ जाए और हम बिल्कुल स्वस्थ रहे, कभी हम उससे जरा भी हम डरे नहीं, ऐसा कोई उनके वार्तालापों में है क्या? I didn't understand the question. Okay, I will repeat that in English. Okay. Whether Krishna ji has propagated any kind of adventurous nature or to nurture anything adventurously, because he mostly, I have found and I read in the journals of 1973 that he used to be very near to the serpent, that is the cobra, and he was never afraid of it. He was never afraid of certain bear also, where because he remained in Ojai, then California, then Malibu,
These are three places where he wrote so many things. He was just near the nature, and he was never afraid of any time, whether it was night or dawn or anything else. So time factor was also there. So I think that he has never told us about being adventurous. If somebody is adventurous, so what kind of advice or what kind of explanation is given by Krishnamurti? Do you have any such references? No. He only used to say that you love everything. Nothing will harm you. One evening he told us, an extraordinary thing I'm going to announce. An extraordinary thing I'm going to announce. People were coming forward in their seats and trying to listen what he's going to say. And he did say, nothing untoward is going to happen to me. That's what he said. So whatever he does with love. So this statement of his, I can never forget in my life. He says, nothing untoward will happen to me. And he said, I'm going to say something extraordinary today. So people were all keyed up to listen to what exactly he's going to say. Will he say that I am so and so and so and things like that? No, but he just said, nothing untoward will happen to me. So this is the strong belief he has in the power of love. This is exactly what he was. And he was full of love, affection. When he looked at us, we'll really melt. It's not a question of, he's looking at us is something like, it's a catharsis in a way, and it will melt us. That's the thing I can say about him. Wonderful, lovely way of looking at you with a lot of affection. And even youngsters and people like us, he would still address us, sir. I used to think why he sees me and he says, sir, but that's the perhaps the habit which he picked up from UK. He would say, sir, can you... I used to be quite surprised at the amount of courtesy he would show. And for him, he did not come all the way to the door and see us off, but he did that. That's the love he has for us. Shikharji has raised hand. Yes, Shikharji. Yes. I just wanted to say, when Krishnaji said that he was full of love, I remembered that I think that might not be the exact way to say that, but actually we can say that he was love. I mean, yeah, and that's what I think Khalil Gibran, I think there was one meeting that happened of J. Krishnamurti and Khalil Gibran, or there was some philosopher, and when J. Krishnamurti entered the room, this other person said, and since he was also a very highly, enlightened being, he said that it seemed like Prem ka Devata, the god of love has entered the room. So, he was love incarnated, really. Prem ke Swarup, he was like that. So just had that thought. Thank you, sir. Thank you. Vimalji. Yeah, I just wanted to add something that I know, maybe others may not know this. So Arun Shourie, who's a famous economist and was Indian Express editor for many years, he's written a book called Does He Know a Mother's Heart? Now, this book is his autobiography, and this title is connected to his meetings with J. Krishnamurti, because Krishnamurti asked Shourie this, that do you know your wife's heart? Because Shourie and his wife had a cerebral palsy child. He was mostly on the wheelchair, and his wife had devoted all her life to taking care of that child. And there is a lot of passages in this about Krishnamurti's meeting, Shourie's meeting with Arun Shourie's meeting with Krishnamurti. I don't remember the exact thing, but I do remember one thing, that for a long time, Shourie meet Krishnamurti, only Arun Shourie used to meet him. So once when she met him and he spent some time, he asked Shourie to leave, and he spent some time quietly talking to her alone. It seems that she cried. She was such a strong woman, never shed tears, but that day she was inconsolably crying. And that is related in this book. Any of you want to read and go into this, can research this part. It's called Does He Know a Mother's Heart by Arun Shourie. Thank you, Vimal ji. And I think one last question, Archana ji, आप पूछना चाहती हैं? कुछ chat box में डाला है आपने?
तो NC Krishna ji, she wants to ask you a question. And then Tell me, sir. Keshwar ji, prayer. Yes, you can ask me. Sir, I'm just curious to know about him as a person. Did he like food, music, or any other art form which pleased him, or he said vocally about or expressed about it, or he was always calm and composed? I mean, I really. He was not a great eater. He was not a great eater. He used to eat very little, frugal in his food habits, and he listened to music. He listened to music. In fact, one day when we were sitting in the discussion room in the hall, MS Subbulakshmi arrived there. MS Subbulakshmi, the famous Carnatic musician, and she came and she went on her knees to pay namaste. And he was looking at her and he said namaste, and that lady sat for some time and then she left. And what Mr. Krishnamurti said at that point of time, Krishnaji said at that point of time, you first, if you can become a good human being, music follows. If you can become a good human being, music follows. Perhaps that's an indication. If you're a human being first, if you're humane in your nature, everything else will follow. The art, the music, everything. So he was a good, avid listener of music, and he was not very fond of food. He used to eat very little. And yes, he was very, very careful about the clothes he would wear. And somebody asked him, why are you so particular about your clothes? Then he said, it is to make the other person comfortable. It's not for me to make a style statement. It is to make the other person comfortable that I wear neat clothes. This is exactly what he said. And normally we wear perhaps clothes to make a statement of style, say for example. But he said, I'm wearing these clothes to make the other person comfortable who's coming and sitting next to me or talking to me and things like that. Can you beat it? Can you be so considerate about others? It is to see that the other person is comfortable, that I'm wearing some clothes which he would remember that this is how he is dressed and he is so immaculate. That's why I use the word immaculate. Everything about it was clean, very crisp, and things like that. So these are all small things which I could observe. And as Harshvardhan Sheth was saying, he used to walk very fast, swing the left hand more than the right hand. I'm just giving some detail which may be of interest, it may not be of interest. He used to swing the left hand more than the right hand. I don't know why it used to happen like that. Maybe because the heart is on the left hand side. I do not know. He used to swing the left hand more while walking than the right hand. So these are all certain observations because we used to walk behind him. And sometimes he would wait, look around and wait for us to join him. And then he would walk. No talking, no conversations, just walk. And then get back to the place where his car was parked and he would go on his way and we would find our way. That used to be the pattern on those days when there were no talks, the evenings which were free. So this is what he was not a great eater. Okay. Thank you so much, Krishna ji. NC Krishna ji, आपका, विभा जी आपका और वर्षा जी सभी का आभार. आप सब लोग जो ज्वाइन किए सभी का आभार. थैंक यू शिखर जी, थैंक यू शिंदे साहब, थैंक यू विमल जी. और मैं शायद अतुल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो केशव जी से कहूंगा कि वे आज की सभा का अंत प्रार्थना से करें. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, और आप सभी की आज्ञा से मैं अब सभा का समापन करता हूँ। सी यू अगले मंगलवार को फिर से। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।